Okay, regarding assembler and the types of the assemblers that are available, ठीक है. So उससे पहले हम लोग थोड़ा सा assembling language code को देख लेते हैं. हमें ये पता है from our previous O-level knowledge कि the assembler is basically a translator that translates a assembly language code line by line into a machine code, ठीक है. सो अब पहले असेंबली लैंग्वेजेस कुछ इस तरह की थी कि दे यूज टू हैव अ ऑपकोड एंड एन ऑपरेंड, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल द निमोनिक ऑफ एन ऑपकोड इज लाइक एलटीडी, ठीक है, एंड ऑपरेंड कैन बी 150, ठीक है. So now according to this your syllabus, the operand can be a direct value if it has a hashtag. It can be an address, and the address can be numeric or a physical address. So the actual address of a RAM, or it can be a register, ठीक है. सो अब जब आपके पास फिजिकल एड्रेस ऑफ द रैम होता था और एल टी डी 150 फॉर एग्जाम्पल आए, तो असेंबलर ने जब उसको ट्रांसलेट करना है तो इट सिंपली नीड्स टू गो टू द एड्रेस 150, गेट द वैल्यू एंड लोड इट इन एक्यूमुलेटर, ठीक है. लेकिन असेंबली लैंग्वेजेस थोड़ी सी एडवांस हुई एंड दे स्टार्टेड टू गिव अनदर फैसिलिटी कि ऑपरेंड में उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी, विच इज़ योर सिम्बॉलिक एड्रेस. So the symbolic address means that you can use alphabets or alphanumeric to represent a memory location. So for example, if this is your memory location, you can use an X to represent this memory location. So this concept is the same as a high level language जिसमें हम identifier करते हैं, लेकिन इसके अंदर इनको identifiers की जगह हम कहते हैं labels, ठीक है. ओके, नाउ अब ऐसी सूरत के अंदर इफ द असेंबलर नीड्स टू ट्रांसलेट इट, इट नीड्स अ टू पास असेंबलर, ठीक है. अब नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन द टू पास असेंबलर कि इन द फर्स्ट पार्ट्स what it does is कि it creates a symbol table and it fills the symbol table with the physical address of a symbol, or you can say के of a लेबल, ठीक है. इसकी वजह से क्या रिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट फॉरवर्ड रेफरेंसिंग इज रिजॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इनकाउंटर एन इंस्ट्रक्शन जंप टू लोकेशन 1, तो वो जब तक जंप नहीं कर सकता जब तक कि उसको पता नहीं है कि लोकेशन 1 का एक्चुअल फिजिकल एड्रेस इन रैम क्या है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेफरेंस. नाउ हाउ डज इट फिल अप द सिंबल टेबल. ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी है कि इट रीड्स द असेंबली कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है. वेन एवर इन एनी लाइन इट इनकाउंटर्स अ सिंबल और अ लेबल, ठीक है. सो व्हाट इट डज कि इट एड्स दैट सिंबल और अ लेबल इन सिंबॉलिक टेबल एंड अलॉन्ग विद द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ इट, ठीक है. और अगर लेबल पहले से ही एग्जिस्ट करता है सिंबल टेबल में तो वो उसको दोबारा एंट्री नहीं देगा. सो वन टाइम एंट्री है ऑफ ईच लेबल इन द सिंबल टेबल. सो नाउ व्हेन यू नो दिस, सो लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर, ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि they have given you the first starting address of the start program. So आप ये 0 start program पे लिखोगे जहाँ पे लेबल start program है. उसके बाद आप इसको सीक्वेंस में चलोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on, ठीक है. Okay. So now when you start reading this code line by line, the first symbol that you encounter is offset. So you go to offset and see कि इसका absolute address आपने क्या लिखा है. So the absolute address is 9. So what will you do is basically you will cut this and write the absolute address, ठीक है. Now the next symbol that you encounter is basically value. So you go to value and see what's the absolute address of this value. So you insert that.
अब नाउ ये सर्कल में क्या चीज़ें चल रही हैं, सर्कल में एंट्रीज चल रही हैं कि ये कौन सी एंट्री है इन द सिंबल टेबल. सो दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री. सो इफ यू नोटिस सिंबल with its absolute address, then again symbol with its absolute address. तो अगर ये फिफ्थ एंट्री थी तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, दिस विल मेक इट अ सिक्स्थ एंट्री. अब नाउ इफ यू गो फर्दर इन द कोड, सो हमने ये लाइन भी रीड कर ली, ये भी कर ली. सो नाउ यू विल इनकाउंटर एंड प्रोग्राम, सॉरी, so you will encounter end program. So if you see the absolute address of the end program, it's 8. ठीक है. So what you will do, you will first enter the label end program and then the address is 8. So what's the entry number of this end program? Is the 7th entry and this was the 8th entry. Chalo, I hope you guys understand this and good luck.